all doing? कैसे हैं आप सभी? Hello everyone, good morning. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग. We can take up a topic today, finally. It's been so long since we are thinking and not doing it. Today we can do that. So, let's get. Hello, Swan Satsayag ji. Abasha. Hi Dinesh. Thank you, Swan Singh ji, for liking. Lakhan, hi Lakhan. हेलो शिवा. आप लोग मुझे यशी बोल सकते हैं. रमाकांत, गुड मॉर्निंग. हेलो आरव, हाउ आर यू? दिनेश, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आप पंजाबी बोल दिया. पंजाबी तो मुझे इतने अच्छे से नहीं आती है. ईरान, नाइस. सो आई ओनली नो सत श्री अकाल. Some little phrases I know, that's all. ज़्यादा हेलो बलराज, कैसे हैं आप सभी? Yeah, so today we can take up one topic. Yeah, last time we were discussing, we can take up one topic. I know. Do you guys even like it? You don't listen to Punjabi song? Not much. I listen to some of Punjabi song where I feel like dancing or something like that. Workout के टाइम पे थोड़ा once in a while. पंजाबी मुझे अच्छे से समझ नहीं आती है. That's why. Good morning. Something in Malayalam. Thank you Rakesh ji for liking. हाँ जी मासूम भाई, सब बढ़िया है यहाँ पे. आपको भी गुड मॉर्निंग. उम्मीद है आपके लाइफ में भी सब अच्छा हो, आप परिवार सब. एंड थैंक यू. शुक्रिया शुक्रिया.
Is there any problem in voice? जी नहीं, अभी तो चाय नहीं पी है बलवंत जी. आर यू नॉट एबल टू लिसन टू मी गाइस? आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो चंदा, हेलो असलम. असलम, हेलो असलम. नो ऑडिबल. Increase the sound. I don't know. The sound is full here from my side. Is it better now? I don't know. I just increased the voice, and I don't know if it'll gonna impact this. Is it better? You're audible. Okay, okay. Cool. चश्मा. हाँ, yesterday only I bought it. This चश्मा मैंने कल ही लिया है. थोड़ी आई सेट वीक हो गई थी. 0.25 in this eye. Now I don't know if it's fine. So now it's better. But still I'm not able to read it properly. I don't know. I think maybe it's distance. Thank you, Arne. Good night. Thank you. I'm good. How are you, Aziz? Bye bye, shoulder. Hope to see you next time. Good morning, Mithu. I am intentionally sitting right here, Rohit. नाश्ता तो हाँ नहीं किया है बेगराज तनवर जी. राकेश शर्मा जी, थैंक यू. आई बैलेंस, गुड मॉर्निंग. Thank you, Balwant ji. Thank you for constantly coming and liking. Thank you so much. I live near Delhi. Mallu King. Where do us go on December 31st? A movie or party. Nice. Oh, you went for early morning run. That's good. I also went out for something. These days I have stopped running a bit because I was having, I don't know, maybe I have suddenly increased the pace of running. That's why there was a little slight pain in my knees, but now it's fine. I'll start again. It's been like 10 days since I haven't run. I'm doing workout and all, everything at home. And there's a small gym in your park, na? Like all Indian parks have. So that I go and do in the morning. And some walk, of course. Full face to ji. Hey James. So क्यों कर रहे हो सुबह हमको? अच्छा ऐसा तो क्या कह रही हूँ मैं? चंदन जी. Good morning, Vivek, Mansi, Ravan, Johnny Singh. Good morning.
I live near Delhi, guys. So, any old people here? I mean, the old viewers. Shall we start with our topic? Can we do that, please? आप तो तैयार हो गए हम तो सोए हैं. I wake up early, like 4 or 5. That's why. मानसी, हेलो मानसी, कैसे हैं आप? So let's take one topic today. Education system in India. Is it really helpful? I know it might go on a controversial type also, but we can try doing that in a very polite way. So, what are your views on um, our education system? Like, just do your thing. Yeah, yeah, but I think मैं थोड़ा ऐसी इंसान हूँ, क्या करूँ. ग्रीन स्क्रीन रिएक्शन वीडियोस के बारे में देखो. Hmm. So, what do you think about this? Hello, Robin. About education system. What I so first I'll give you my opinion about it. What I think is, even I'm not saying just Indian education system on school level, but even on college level, I think a lot of intervention is needed, and to increase its practicality, and the I think some of the things that are lacking these days are like, first of all, I think the moral things are not actually very well taught in Indian schools. The stories are there, but there's no too much influence, and also about the Indian culture. People don't actually. There's so much of westernization, because we all know that British were here and they have impacted our education system a lot. And today also we can see its impact. We wear coats and all in our schools rather than our Indian traditional things. But I know that is a bit practical also on the other side. But what I feel is our education system should be, I know a relevance of learning English and all other subjects which are actually important to communicate and to have a connection with the outside world as well. But our roots, our traditions needs to also be, rather than saying good morning, namaskar, something like that. People don't, actually feel good while saying all of this. Even so, whatever you get to know in the school, you think it's right. For example, it's not so cool in your outside world to say namaskar, namaste to your peers and everyone. So और वही चीज़ें फिर रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी आगे की ज़िंदगी में भी. दैट तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ये सारी कि थोड़ा इंडियन ट्रेडिशंस पर भी ध्यान देना चाहिए, वैल्यूज़ पर. एंड ऐसा नहीं है कि हमारा सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, नहीं है. ऑल ऑफ आर ट्रेडिशनल things are actually very scientific. So, और थोड़ा our education system great robot who can work 9 to 5 for 30 years continuously. Yeah, I know this is very sad, Rakesh. That I don't know. Something is wrong in the in the roots. I feel, and I don't know. I give a lot of reference from this book, but it's actually this. If you actually look at the education system before British, it was actually very much practical in Indian society. You might call it a bit rudimentary, but it was practical. We used to sit under tree and do all the practical things.
लोग गुरुकुल में रहते थे, वहाँ पे वो हर काम अपना खुद करते थे। अभी लोग अपने बर्तन धोने में ऐसा करते हैं कि ओ माय गॉड दिस इज सो डिस्गस्टिंग। नो, इट शुडंट बी दिस वे। If you are educated means you should be doing your things by your own, and it should you should be feeling proud of it rather than feeling disgusted about it. So these days, if people are asked to do such things, they are like just doing anything. So I think this is one of the things that actually needs to be taught, and also the basic things. If we are going to look at the outside world, the Western world, the good things out there is that they focus a lot on practicality. They'll teach you plumbing, carpentry, all of these small things also which you need to do in your day to day life. And I think once you'll do all of these things in your in your college, and you don't look down to people who are actually doing it on the ground level in our society. Tell me more. Good with the half face. How are you? I'm good, Kabir. How are you? अच्छा जी, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, यश. Hi, currently I'm traveling home. We'll see you tomorrow. Bye. Oh my god. Oh, that's good. That's good that you're going home. I was also telling you some days back. Okay, go visit your home. It'll actually help you, deal with the things. So it's good. It's good. Go home. Have good food. घर का खाना खाओ अच्छे से, मस्त मजे करो कुछ दिन, and then come back. Hope you have a very good time in your home. Bye bye. Retake, bro. हाँ, so हाँ, हिंदी वाला बात. Show your full face. Someday it'll happen. Kabir. I am good, राहुल शर्मा जी. हाँ, तो मुझे ये लगता है कि ये सारे बेसिक ट्रेडिशनल चीज़ें भी सिखानी चाहिए. अदरवाइज ऑलरेडी हमारे जो जनरेशन है, द प्रेजेंट दिस जनरेशन, ऑलरेडी हम बहुत गैप आ चुका है प्रीवियस जनरेशन से. तो मुझे लगता है, और अभी हम लोगों को नहीं सिखाया गया, तो द लिंक विल ब्रेक. लिंक ख़त्म हो जाएगा हमारा पिछले वाली जनरेशन का और आगे वाली जनरेशन का. हमें कुछ नहीं पता होगा. वी ऑल विल बी वेस्टर्नाइज्ड. सो वो मुझे लगता है कि थोड़ा एक्चुअली इस सब चीज़ों को ना, हमारे ट्रेडिशनल और जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं. आई नो इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. आई नो इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. बट आई थिंक उस पर एम्फेसाइज करना, हमारे ट्रेडिशन पे, ये कल्चर पे, हाँ, वो होना चाहिए. मुझे लगता है कि एम्फेसाइज होना चाहिए थोड़ा. अदरवाइज विल लूज ऑल ऑफ दिस. इट्स नॉट अबाउट वन कल्चर. इट्स नॉट अबाउट वन रिलीजन. सारे, आई थिंक जो भी इंडिया में रह रहा है, एक लाइफ स्टाइल तो सबका कॉमन होता ही है ना, और बेसिक चीज़ें जो कॉमन होती हैं ना, वो होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है रिलीजन को थोड़ा साइड में रख के इन सारी चीज़ों पे फोकस होना चाहिए. जैसे हम आई थिंक हम उन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसे रेस्पेक्ट में देखते हैं जो अपने ट्रेडिशंस को, अपनी वैल्यूज़ को होल्ड करके रखते हैं. फॉर एग्जांपल जापान, चाइना, और ऑल ऑफ दीज अदर कंट्रीज एज वेल. जापान को सब कितना रेस्पेक्ट करते हैं. वहाँ पे वो दे आर स्टिल वेरी मच कनेक्टेड टू देयर रिलीजन. मैं बहुत लेट. नहीं जी, आप लेट नहीं है, ठीक है. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ थोड़ी होनी चाहिए हमारे उसमें. ये एक मुझे अभी आई रिसेंटली अभी कुछ थोड़े इंटरवेंशंस हो रहे हैं कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे. कॉलेज लेवल पे भी है. इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल, यू नो, ऐसे कुछ बाहर की दुनिया से, मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड से पीपल यूज्ड टू कम, कि एक वो एकेडमिया और प्रोफेशनल लेवल का कुछ कनेक्शन हो, सो दैट पीपल गेट टू नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू आफ्टर देयर कॉलेज. थोड़ा एक कनेक्शन वाली चीज़ होनी चाहिए. तो वो अभी हो रही है ऑन अ स्लाइटर लेवल, ऑन अ स्मॉल लेवल. बट वो थोड़ा बड़ा नहीं, 50-50 करने की ज़रूरत है आई थिंक उस चीज़ को. कि एक्चुअल कॉलेज वगैरह के बाद पीपल डोंट हैव एडुकेट स्किल टू एक्चुअली गो आउट एंड वर्क. तो वो गैप फिल करने की ज़रूरत है एजुकेशन लेवल पे, ऑन कॉलेज लेवल एज वेल एज आई थिंक ऑन स्कूल लेवल. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. मतलब ठीक है, academics is important, all of this is important, but I think you spend a lot of time in school.
a lot. So it could be beautifully divided into, extracurricular activities, your moral values, your tradition, and your academics. For the motion, backup plan, safety net, with more population competition, we have it. More to be successful for education trains students to work under pressure. Yes. What is that? I don't know. A lot of. I think this is one of the things which is, which can actually make us different from the rest of the world. There's this chapter, it was there in 12th NCRT, class 11, class 12th English NCRT. I still remember that one chapter. If you are from CBSE board, I think you also know. Its name is The Last Lesson. I still have a lot of impact from that chapter. It's the first chapter of that book. And it says um, the key to your individuality is in your own language और इन योर ओन ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स. क्योंकि उस टाइम ये था कि वर्ल्ड वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी है उसमें, जिसमें कि जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था और उनका सब कुछ करिकुलम चेंज कर दिया था वहाँ पे जाके. और सबसे पहली जो चीज़ करते हैं जब वो किसी एक कंट्री को कब्जे में लेते हैं, दे चेंज देयर एजुकेशन सिस्टम, जिससे कि वो अपने बारे में पढ़ा सकें, अपनी चीज़ें बता सकें और इन्फ्लुएंस कर सकें. क्योंकि अगर लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को भूल जाएंगे, देन दे हैव नथिंग, दे आर जस्ट hollow person. This is why the guys at the top or who make it big here learn skills like resourcefulness and resilience, street smartness, which Western education doesn't teach. Yeah, I think we have Western education. It was, the old Western education that we still carrying, that we still have. Western education have evolved a lot in the West, actually, in the present day. But here in India, we are still following the year-old Western education, which is, I think, one of the bad thing, because they gave us that Western, in English education system, and now we are just stuck to that. We are not evolving from it anymore. I think that is also one of the problem. Not working half primary education and still become a network hub. I was reading I am alumni have increased marriage prospects. Those degree. Yeah, I know. I also read about the fall of Islamic Caliphate. Not because Mongols attacks that, but they lost their roots and values. Yeah, even at that time, people know that, destroying culture and tradition is one of the, the key. That's why whenever other different kind of power attacked other country, they destroy their culture and tradition, their temples. Because at that time, temple was the institution where education used to also give. In India, temples, are important for us. At that time also it was, and even, they destroyed Nalanda. So it और वो सब चीज़ें बहुत एविडेंट हैं जो दिख रही हैं आजकल की दुनिया में, कि उस टाइम भी लोगों को पता था कि एजुकेशन सिस्टम इनका डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इनके ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय करनी चाहिए, इनके कल्चर डिस्ट्रॉय करना चाहिए. और हम पता नहीं अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है. हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, ये सब इम्पॉर्टेंट है. और ये नहीं रहेगा, हम बस ग्लास बिल्डिंग्स में जाके रह लेंगे. मतलब बीइंग एन आर्किटेक्ट, आई कैन से दैट people fantasize so much. They are just blindly copying the Western architecture as well, not just in tradition and education system. It's reflected everywhere. Hello Sandhu. Good morning. Good morning.
How are you? Everyone is fine here. How's everyone at your place? Sorry, it's evening there. Good evening. Hello, Jay, Maksud, Ashish, Mahindra. Yes. हाँ. So what I was saying is this. मैं थोड़ा distract हो जाती हूँ comments पढ़ते हुए. So good morning, all of you. Good morning. Uh, so yeah. So these are, I think, my views about it. But actually, we need to go back to our tradition. Too much of modernization has already happened. तो बात यह है कि no, everything is good here. Thanks. Good to know that everything is good with you, Sandeep. Nothing has happened there. So yes, this is what I think is. These are what are your views on it? I think you're from US right now. Okay, you are in US, right? Hmm. So I think these. I think, what I was saying is that I think a lot of unemployment is also causing because of this lack at the education level, and we spend a lot of time. If I look back, I against the motion, outdate career, producing degree holders, not thinkers, memory, no intellect. Isn't equal to intellect, yes. Skill based jobs are rising in tech or startup world, for example. Yeah, I totally agree with this. Outdated curriculum, yes. A lot of intervention is needed, especially on the school level, because that is the primary education that we get. That is, the first layer of our memory starts from there. The first layer of whatever we are going to face in the world starts from there. And और वहाँ पर इफ़ वी आर नॉट, और अगर वहाँ पर हम इस चीज़ को नहीं सीखेंगे, इन चीज़ों को, वो फिर ज़िंदगी भर हम उन चीज़ों की कभी वैल्यू, क्योंकि बिलीफ इट इम्पैक्ट्स आवर बिलीफ सिस्टम एज वेल. सो आई थिंक या व्हाट यू आर सेइंग इज आल्सो completely true that we are just रोबोट्स बनते जा रहे हैं. एंड सबको बस एक दो तीन प्रोफेशंस हैं, एवरीवन इज जस्ट रनिंग बिहाइंड दोज प्रोफेशंस. अदर थिंग्स और वैल्यू नहीं मिल रही है और सारी चीज़ों को. फॉर एग्जाम्पल, द इम्पोर्टेंस द प्लम्बर्स एंड कारपेंटर्स एंड आई डोंट नो ऑल फार्मर्स गेट इन द वर्ल्ड आउटसाइड. इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है इन चीज़ों की. एंड ऑल्सो वो क्योंकि हम उसको बहुत ऐसे नीचे करके दिखाया जाता है ये सारे प्रोफेशंस यहाँ पर. तो लोग ना खुद करना चाहते हैं, और जो करते हैं उनको भी बहुत गंदे नज़रों से देखा जाता है, मुझे लगता है. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. ये चीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है. स्टूडेंट एक्चुअली डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और दे डू इट विद प्राउड. ऐसा नहीं है वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, रेस्टोरेंट्स में जो खाना सर्व करते हैं जो लोग, तो वो सब काम कर लेते हैं वहाँ पे लोग. उनको झिझक नहीं होती इस सब चीज़ों में. यहाँ पे अगर एक वेल एजुकेटेड पर्सन वो नहीं जाके करेक्ट कर सकता ये सारे काम. उनको लगता है ओ माय गॉड आई विल बी लुक डाउन टू. वेटर, हाँ, वेटर एंड ऑल, वेटरेसेस, ये सब काम नहीं अच्छे, मतलब नहीं देखे जाते. तो एक अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन, ही और शी माइट नॉट एक्चुअली गो इन टू दोज काइंड ऑफ प्रोफेशन, बिकॉज इतने ज़्यादा गंदे तरीके से देखा जाता है इनको. तो what I feel is this mindset actually need to be changed.
I think this even. Hello, namaskar ji. Top expert. Jai Shiv Rai. Jai जय शिवराय. गुड मॉर्निंग मुकेश जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप सभी? हसन, गुड मॉर्निंग. यू डू हैव अ नाइस डे हसन. किशोर कुमार साहू. You can call me Yashi Sahu ji. So it turned out education for poor and working for the rich. Yeah, and also this thing, the contacts and networking. But nobody even talks about it, and this is one of the things which is very very important. कि you should have a good network of people around you and contacts. इस चीज़ की बात ही नहीं हो रही कहीं. और एक्चुअली जब आप ग्राउंड रियलिटी पे उतरते हो, जब आप पैसे कमाने के लिए उतरते हो इस धरती पे, इस दुनिया में, आफ्टर योर एजुकेशन एंड एवरीथिंग, देन यू रियलाइज कि ओ माय गॉड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई डोंट नो हाउ टू डू इट. हेलो ऋषि, कैसे हैं आप? नाइस, थैंक यू. आज अलग दिख रही हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ चश्मा. इट्स अ बिट डिफरेंट. मैंने सोचा थोड़ा तो कुछ तो डिफरेंट ट्राई कर लेते हैं ज़िंदगी में, हमेशा सेम चीज़. Yeah, rich gets better job through networking. Yeah, networking, contacts. वो थोड़ा सा reference. We call it, sometimes we will call it nepotism and all, but I think whatever it is, the they get the advantage of the hard work that their ancestors have did. Thank you so much. See you soon. Hope you'll come again soon. Have a great day to you too. Good morning, Kuldeep ji. Good morning, Gaurav. How's Chandigarh? Hello, Raja. Raja ji. Keshav, I am intentionally not doing that. हेलो अरशद अली. अरशद अली जी, कैसे हैं आप? मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ. ओके, किस बारे में? Oh my god, I'm not actually that good on it. Advocate, no, am I looking like an advocate? No, I am not advocate. But yeah, some days back only I've bought this Constitution of India. That is a different thing. But yeah. मैं से क्या करूँ जो मेरी, ये तो आप ही अच्छे से ध्यान दे सकते हैं ना, आपने ऐसा क्या किया है जो आपकी गर्लफ्रेंड रूट की है. So you should be, nobody outside in the outside world apart from you two can actually solve that. You two have to sit down and think about it and then fix the problems. Nobody in the outside world can actually help you in that. And if you are actually going out and asking for solution in the outside world, you are on a wrong direction, my friend. Rose Festival starting on Friday. Oh, that's good. That's good. Also, for the motion that from education is important, I forgot to mention the survivor bias for everyone. Success mentors, hundreds have failed. Thousands have failed. Okay. I think I think competition is also too much over here. Also, we need form education for jobs like doctors and engineers because we can't automate everything. There needs to be a person who'd accountable if things go wrong. I can't say. Yeah, I did it. Yeah. That is also there.
And also, I think next topic that we should be taking is overpopulation, because a lot of things are going down the way because of overpopulation. I think the majority of the problems that we are facing right now is because of population. So tomorrow we can take this topic, mm, population rise, and what are its day-to-day implications that we are facing. Because all of this, I think, before it used to be like 10 लोग होते थे एक गुरुकुल में और एक गुरु होते थे और वो 10 साल तक उनको पढ़ा रहे हैं, 10-15 साल तक उनको पढ़ा रहे हैं, एक एक बच्चे पे अच्छे से फोकस कर रहे हैं. But अभी I think the ratio of teacher and students has increased, decreased a lot. That is also one of the things. I think according to standards, I think 40 student per teacher now, but it is actually in the standards. On actual ground reality, it might be very different, and it is, because we did a study in one of the smart city in India, and there we figured out that there is a huge difference. Shy girl. Am I shy? Hello Maya. Work from home. Malaka. Makala. Hi. Yes, civil services. Chai. वैसे तो I'm not into chai, but it's fine. Kevin. Hey Kevin. Good morning. Any new painting? No, since then I didn't do any. Or maybe this weekend we can again do that. What say? We'll make a live painting. This time I'll be making it better, unlike the last time. This cause of competition, even with Center for Education, Formal Education Act was first step. Yeah, I think because for one job, a lot of people are applying for one job, and how it's, even if we look from their perspective, it's hard, actually figure out who is actually, it's, how are you going to filter out things if a lot of people are applying for one job? How are you going to filter out education, experience? These are the two bases, I think, on which people are judged. So otherwise, आप ऐसे personally, it's not feasible in this population, that कि एक एक से अच्छे से इंटरव्यू करके आप बात कर सकते हो. नहीं, तो फिल्टर आउट करने का यही एक तरीका है कि हो सकता है कि इंसान वैसे बहुत अच्छा हो, हार्ड वर्किंग हो, ये हो वो हो, अगर उसके पास स्किल्स हो, बट द क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड समबडीज, तो यही सारी चीज़ें ही देखी जा रही हैं. क्या कर सकते हैं. We be best. Hey Joseph. Okay. Thank you, Fiddle. Distribute free apples. This is, I think, I think this is, ऐसा होता है ना कि पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो फिर सॉल्यूशन निकालो. दिस इज, आई थिंक, दैट थिंग. एप्पल, we should be looking for a solution, for some solution prior to that. And also apple is not very much good for your health, somebody's health. And it is a last thing that one should be doing. A lot of precautions and all is needed, and education is needed in that. And I don't mind actually talking about it and going in deep in this topic, because that is, I think, is actually very much needed in today's world, especially in India. We are on the top, and isn't it irony that we are on the top of population? We are the most populous country. Hello, Robin, Pradeep, Jay.
Yeah, population is, I think, one of the major concern. I think the adulteration in food and in other things also, because it's not easy to cater a huge population just with organic food. It's hard. And thank you, thank you. Professional roles लीजिए. Elon was advocate against college पर spaces. टेस्ला की वेबसाइट में जॉब के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए. हाँ, आई थिंक क्योंकि यही एक इजी तरीका है इन लोग के लिए टू एक्चुअली फिल्टर आउट द रिक्वायरमेंट्स दैट यू वांट इन अ पर्सन. तो आई थिंक क्या ही कर सकते हैं, और क्या ही क्राइटेरिया हो सकता है कि आके पता नहीं हेड स्टैंड करके दिखाओ. मतलब आई थिंक ये तो बेसिक चीज़ें हैं. एक्सपीरियंस को अभी ये होने लगा है कि एक्सपीरियंस को लोग ज़्यादा वैल्यू थोड़ा देने लगे हैं, विच इज़ आई थिंक गुड. बट for I think freshers, it's a bit problem these days. Thank you, Pradeep ji. Hey Vishnu. हाँ, कल we'll discuss population because I think this is actually one topic that need attention, a huge attention, because I think it is the root cause of all the problems that we are facing right now. Be it anything, I think air pollution, landsliding, all of these, anything you name, and it's just related to population somewhere or the other. Thank you, Deep ji. Jai Hind, Rakesh, Fauji ji. Full ratio, please. मैं इतना ही English medium Bali ma'am. I want to go to Bali once. हाँ जी, दीप नारायण जी, आई एम डूइंग इट इंटेंशनली. मैं जानबूझ के ऐसे बैठी हूँ. Any context of conversation? Yes. Today we are discussing about the education system, Indian education system, and tomorrow we are going to discuss about population, because in the end it's all related to population only. Anything, um, anything, be it whatever, natural disaster, man-made disasters, anything. I think all of these are related to population, and it actually needs a lot of attention. We are making it taboo. We don't want to talk about such things. I know, and also coming at sex education as well. I think these are all the topic, and I really appreciate this movie. God is Great. I think God is Great Part Two, in which they actually talked about it very boldly. Really appreciate that. Such movies are really in the need of our. We should start from the topic of human reproduction to Sharma ji. I think it is being taught in school in 7th class. So I think we are all adult here, and the basics we all know. So we'll carry forward. I want you to actually read about it once you come tomorrow. Before this, you should be reading it. If you are not very bright in this school, you should be reading it before that. Um, because I am assuming you all know about it. To actually coming at the root cause, we should be, actually going beyond it. And these are the small things. And I think this is also even
Did you see Elon and Joey? Overpopulation isn't a concern. I don't know actually. First of all, about this podcast, I don't know. I am not aware of it. Um, Overpopulation isn't a concern. I think for developed countries, it's not a concern. But for a country like us, which is developing as well as overpopulated, it is a concern. It is, something which should be highlighted on an alarming pace. Yeah, I think, I think developed countries also, mislead a lot of, I would say not mislead, but, they don't actually can look from the lens of an developing country. वो बोल रहे थे कि कैसे declining birth rate, fertility rate, replacement level, and more deaths than births, or shortening lifespan. Europe and US rely on immigration to sustain themselves. Actually, this is one of the problems that developing countries are facing these days. It's not developed countries are facing. The first world countries, so to say, are facing these days because their birth rate is very low, and also the death rate has increased, is also very low because medication has improved a lot in developed countries. So the population, the old population is increasing rather than the yeah, compared to the young population, and that's why these countries are in crisis. Because, for example, Italy and Japan, Germany, and all of these countries, they are actually facing these problems because in a country like India, we have a huge youth population, which is a plus point for us. But in other countries, the developed countries, people are actually not willing to give birth to a lot of children. They are like, okay, ठीक है, एक भी चलेगा और नहीं भी चलेगा. We need a gradual decrease in population to old population in the next few years. Ha. Actually, very good, policies we need at this point. Otherwise, it'll all crash down. We actually need very good policies, which so we can see, if we want to look at the future, we can actually look at all these developed countries. They all have gone through these kind of processes. So we have already one case study in front of us, that how things are going. First they developed this industrialization, this, that, and pollution, and then population rise, and then again this decrease in birth rate. So I think all of the countries are following this trend only, and for India also it's gonna come, as we are a bit lagging behind. So we can see all of this and actually frame policies according to that, rather than just avoiding this thing. Best part to control it by using some pest and cheese contraceptives, which are earlier in Europe used to. Yeah, I think these all things could be actually taken care of. ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले का जवाब नहीं है वगैरह वगैरह जो आप बोल रहे हो. इट्स लॉर्ड शिवा. ऐसा नहीं है, बट मैं थोड़ा टॉपिक में हूँ ना, तो फिर वो फ्लो टूट जाता है. Where there is so much of taboo to us, can you talk about it? I think it's before it wasn't. I think before Britishers it wasn't a taboo in India. People used to actually very much open about all of these things. We are the ones who actually, came up with Kama Sutra and all. So we were very bold about it, but I don't know, because of this westernization and now they are open and we are not.
So see how much influence we are right now. कि उसके अपनी legacy आगे बढ़ानी है without having the need of resources to sustain. Yes, everyone is just just running. They want their own blood and मतलब things like that. But nobody is actually thinking about the things which are on the ground level. We are not able to sustain. If we'll go on this pace, I don't know. Resources are not enough in near future for us to actually sustain, and we already suffer from a lot of adulterated food and basic things, food and water, and all of these things are we are not getting, and even air. The basic से भी basic चीज़ वो नहीं हो रही है. Why we are shy about it? Any reason? I think the lack of education is one thing. I think these days people are actually coming up, and also even I think one of the things by which the entire population, be it educated or uneducated, get influenced is movies and all. And in movies and all, people don't very much open about it. They are just showing so these kind of movie, that the God is Great Part 2 kind of movies, and all of these should really need to come up, because these kind of thing actually influence a lot of population. मूवीज से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो, क्योंकि मूवीज़ में ये होता है कि आपको बहुत एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखा होने की ज़रूरत नहीं है ये बेसिक चीज़ों को समझने के लिए, अगर वो चीज़ मूवी में दिखाई जा रही है तो मुझे लगता है कि वो चीज़ होनी चाहिए. But very nice talking to you. Are you a medical student? No, I am not medical student. अरे लॉर्ड शिवा, आप थोड़ा गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो चीज़ों को. मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बहुत प्रमोट कर रही हूँ वेस्टर्न कल्चर को. मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इट इज़ वाइड स्प्रेड. लोग समझ जाते हैं इंग्लिश को, एंड इस प्लेटफॉर्म पे हर जगह से लोग आते हैं. साउथ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, इवन बाहर के लोग भी आते हैं. तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा बन जाती है जिससे आप एक वाइडर ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो. इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चर की बातें कर रही हूँ, ठीक है. मैं तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम प्रमोटिंग इट. इट्स जस्ट दैट इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. हमें इसको इतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए, आई थिंक, कि ये एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है, और कुछ ऐसा प्रमोशन का नहीं है यहाँ पे कि आप प्रमोट कर रहे हो ऐसी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये बस एक ज़रिया है आपको बात करने का, और अगर आप एक बड़े ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हो अपने भाषा से, तो एक भाषा ही तो है ना, इतना इंपॉर्टेंस पे देना है उसको. ठीक है, अगर आप कुछ हिंदी में बात करो तो मैं हिंदी में बात कर लूँगी, बट इसको ऐसे इतना बड़ा वो बनने की ज़रूरत नहीं है. और सॉरी, ओ माई गॉड टू, मैं थोड़ा मूवीज़ के नाम में, हाँ, इट्स सॉरी, इट्स ओ माई गॉड टू गाइस, ओ माई गॉड टू. हाँ, बद्रीशाल, जय बद्रीशाल. इंडियन मूवी शुड item songs achieve stunts and being hopelessly romantic instead of having both. हाँ, आई थिंक तो बहुत ये सारी चीज़ों को भी थोड़ा अपने चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं सोसाइटी को, क्योंकि एवरी स्ट्रेट ऑफ पीपल आर वॉचिंग इट, और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो यार मूवीज़ से. अगर वही मूवीज़ में वायलेंस और ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो पीपल will be proud to do that rather than actually doing, going at the root cause, the root problems that we are facing these days. हाँ,
मतलब हिंदी में बात करा जा सकती है, मतलब ठीक है। अब मुझे लगता है कि इंडिया में भी आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ पाते हैं एटलीस्ट। ठीक है, बोलने वाली बात अलग है कि बोलना सब नहीं बोल पाते, इतना नहीं होता पाती चीज़ें, बट समझने के लिए तो आई थिंक बहुत सारे लोग समझ लेते हैं आजकल इंग्लिश। और मुझे लगता है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आनी चाहिए शायद सबको, क्योंकि ये आप कनेक्ट कर पाते हो बाहरी दुनिया से भी। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश को कुछ प्रमोट करना, बट आप एक उसमें नहीं रहते फिर कि हाँ मैं तो नहीं, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में है यार आजकल। ठीक है, आप फ़ोन यूज़ करो, उस पर सब कुछ इंग्लिश में है, बाहर सब कुछ कंटेंट मेजरली इंग्लिश में है। तो हिंदी भी आनी चाहिए। हिंदी तो सबसे मातृभाषा है भाई हमारी, वो तो कभी नहीं हट सकता। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि और बहुत सारी चलो यार, हो गया टाइम आज के लिए। अच्छा था वैसे आज का कॉन्वर्सेशन, बट हम कल पॉपुलेशन पे बात करेंगे। बी प्रिपेयर्ड गाइस, इट इज़ गोना बी वेरी दिस। हाँ यार, मतलब ये है, मुझे पता है ये एक डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कई बार कंटेंट को, और बहुत सारे लोग समझ भी आते हैं। तो मैं बीच में कोशिश करती हूँ कि जो लोग हिंदी में बात कर रहे हैं एटलीस्ट उनसे हिंदी में बात कर लूँ, और जो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं उनसे इंग्लिश में बात कर लूँ, तो एक हो जाए। बट पता नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस चीज़ में। मैं क्या ही करूँ, मुझे समझ नहीं आता हिंदी इंग्लिश का टाइप। एक 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 लाइव एक दिन हिंदी में और एक दिन इंग्लिश में। हाफ, हाँ हाफ सही सॉरी, हाफ फेस ही डिस्प्ले मैं कर रही हूँ। टाइमिंग इट्स फ्रॉम 7 to 8 AM। हाँ जी, हाँ दिल्ली में नहीं रहती मैं, एग्जैक्टली दिल्ली में नहीं रहती, दिल्ली के पास एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें रहती हूँ। हाँ मतलब मुझे भी ये लगता है दोनों ही आने चाहिए। मतलब एक आपको अपनी मातृभाषा तो आनी चाहिए, उसमें आपको मतलब मैं मेरा ये था कि मैंने तो 12th में भी हिंदी ली थी, मुझे हिंदी से इतना वो था। हिंदी लिटरेचर मुझे बहुत पसंद है, मुझे हिंदी पोइट्री और लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद है। मैं क्या बताऊँ, मुझे पोएम लिखना भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो मेरा हिंदी के लिए थोड़ा ऐसा था कि नहीं, मुझे 12th में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें हिंदी ही चाहिए था, तो ये था। बट फिर ये कि ओवर टाइम सारा सब कुछ एजुकेशन सिस्टम इज़ इन इंग्लिश, आप भाग नहीं सकते। और ऑप्शन भी नहीं है कॉलेज में, देयर इज नो इवन ऑप्शन। मुझे तो समझ नहीं आता हिंदी वाले लोग क्या करते होंगे जिनको नहीं आते इंग्लिश, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हिंदी का। तो भाई, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश भी काफ़ी हद तक आना ही चाहिए लोगों को इस टाइम पे, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप एक मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो इंडिया में, तो आपके लिए सस्टेन करना मुश्किल है काफ़ी। क्योंकि मैंने देखा था मेरे कुछ फ्रेंड्स से जो बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, क्योंकि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जिसमें पूरे इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया के लोग आ रहे हैं, इवन बाहर के भी लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोफेसर आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। कोई हिंदी में नहीं पढ़ा रहा है, पूरा करिकुलम इंग्लिश में है। तो वहाँ पे आपको, जैसे कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स थे, उनका ऐसे था कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। ठीक है, और उनको अपनी मातृभाषा आती थी, जैसे तेलुगु, तमिल और समथिंग ऐसी। तो उनके साथ ये होता था कि अब उनका तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है फैकल्टी के साथ या फिर आसपास के लोगों के पास। लोगों को तमिल नहीं आती या तेलुगु नहीं आती, और उनको हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती। बहुत सफ़र किया उन लोगों ने भाई, बहुत सफ़र किया है। हाँ मतलब वो सब तो है, बट आपको तो अपना पेस मैच करना पड़ेगा ना। अब हम सब कुछ गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। लोगों को पेस मैच करना होता है। अब नहीं है वो सिस्टम, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस लेवल पे कुछ नहीं कर सकते ना, हम अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सिस्टम, हम इंग्लिश सीख लेंगे, क्या कर सकते हैं। तो ये तो अभी बेसिक चीज़ है ना जो आपके हाथ में है, वो आप कर सकते हो। आई नो तमिल, ओ यू नो तमिल, आई इट्स ऑलवेज गुड टू नो अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। चलिए पंजाबी में चलती, हाँ मतलब बहुत सही है अगर पंजाबी में चलती है ये सारी चीज़ें तो। बट यार मुझे लगता है कि जैसे NITs IITs कॉलेजेस में
पूरे देश से आते हैं लोग, तो वहाँ पे नहीं होती भैया हिंदी में चीज़ें, वहाँ पे मेजरली इंग्लिश में पढ़ाते हैं प्रोफेसर, ठीक है, हिंदी में नहीं पढ़ा रहा है आपको कोई वहाँ पे। और आपकी कोई भी मातृ है, वो कोई एक भाषा में नहीं पढ़ा सकते, तो वो सबके लिए अनजस्टिस होगा। अगर वो हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो साउथ इंडियन लोगों का क्या होगा, उनको नहीं आती हिंदी। और वो तमिल में पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों का क्या होगा, हमें तो नहीं आती तमिल। सो इंग्लिश एक ऐसा मीडियम हो जाता है इन अ कंट्री लाइक इंडिया, which has a lot of diversity in language, linguistic diversity also we have. So इस ऐसी एक कंट्री में इंग्लिश एक ऐसे लैंग्वेज की तरह उभर के आ रही है जो कि सबको कनेक्ट कर लेती है, और पीपल आर नॉट वेलकमिंग फॉर अदर लैंग्वेजेस। मतलब ठीक है, अब मैं बीइंग अ हिंदी लिंग्विस्टिक पर्सन, मैं कह सकती हूँ कि हाँ सबको हिंदी तो जाननी चाहिए, इंग्लिश अगर नहीं जान रहे सबको तो। अब तमिल वाले बोलेंगे नहीं हमें नहीं जाननी हिंदी तो ऐसे कोई एक लैंग्वेज नहीं रख पा रहे हैं ना हम, इवन इसीलिए हमारी कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इसी वजह से, क्योंकि लोग एग्री नहीं हो रहे हैं किसी एक लैंग्वेज पे। और इंग्लिश के लिए सब एग्री हैं, लेकिन कि ठीक है इंग्लिश को रख लेंगे हम, कोई एक रीजनल लैंग्वेज को हम नहीं लेंगे। ये तो ठीक है, तो अब इंग्लिश को ही लेना पड़ेगा ना। हाँ, बाकी सर अपने मातृभाषा बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इंडिया में देश में इंग्लिश को, हाँ मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में इंग्लिश को एक बहुत ज़्यादा स्टेटस का सिंबल भी दिया गया है। मतलब क्योंकि ऐसा ऐसा होता था ना यार, बात ये नहीं है कि उसको, बात यह है कि अंग्रेज़ हम पे राज करके गए हैं 200 साल 400 साल, ठीक है, तो उनका ये था कि वो हम उनको ऐसे ऐसे ऊपर देखते थे अपने से, और वो इंग्लिश बोलते थे। तो अभी भी वही है कि वो परसेप्शन इतनी जल्दी नहीं जाएगा, अभी 70 साल ही तो हुए हैं, 75 ईयर्स ही तो हुए हैं, टाइम लगेगा इस चीज़ को जाने में। क्योंकि ओवर 400 ईयर्स वी आर सीइंग दैम कि वो हमसे ऊपर वाले लोग हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं, तो जो भी इंग्लिश में बात करता है वो ऊपर ही देखेगा। तो वो माइंड सेट है, इट विल टेक टाइम टू चेंज। सो गाइज इट्स डन फॉर टुडे, होप टू सी यू ऑल टुमारो। कल हम लेंगे पॉपुलेशन वाला टॉपिक, एंड आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस ऑन दैट। थैंक यू गाइज फॉर कमिंग एंड होप यू हैव अ वेरी वेरी गुड डे। बी हैप्पी फॉर नो रीज़न, मेक अदर्स हैप्पी अराउंड यू एज वेल। उम्मीद है आप सब अच्छे हों, अच्छा रहे आपका दिन, सबसे बढ़िया हो आज का दिन। तो spread love and happiness, and because this is all what we need in today's world. So bye bye, see you all tomorrow. Bye bye guys, मिलते हैं कल, bye.